और एक बार अगर ये पक्का हो गया कि भाई उनका इरादा नेक है, वो मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए दरवाजा खुलता है। वरना क्या होता है, 5 बजे पापा ऑफिस से आने का टाइम है, चलो यार किताब लेके खेल खेलना है, यार छोड़ो नहीं खेलना है, पापा का आने का टाइम हो गया। ये माहौल अच्छा नहीं है। ये तनावपूर्ण एक प्रकार का वातावरण परिवार में तबाही कर देता है। दूसरी तरफ ये भी कठिनाई है कि बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में बोए होते हैं और वो सपना बड़े होते हैं वटवृक्ष बनता जा रहा है। वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए, तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। वो कहता है मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की क्षमता, परवरिश, इन सारी चीजों को देखे बिना खुद के जो अधूरे सपने रह गए हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई मैं तो इसमें मानता नहीं हूं इसलिए आप भी मत मानिए, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरे रह जाती और मरते हैं तो कहते हैं भूत हो जाते हैं, फिर वो इच्छाओं के लिए तड़पते रहते हैं। तो कभी इंसान के हो या न हो, और वो भूत आपको जकड़ लेते हैं। डायलॉग करना चाहिए माताजी पिताजी के साथ, खुलकर के बात करनी चाहिए, अच्छे मूड में हो तब करनी चाहिए। और ये बात हिंदुस्तान के बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है। भारत का बच्चा जन्मजात पॉलिटिशियन होता है। क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली में उसको पता होता है कि ये काम करवाना है, पिताजी को पता चलेगा तो नहीं होगा, वो चुपचाप दादी के पास जाता है। उस दिन दादी को पूछेगा, दादी जाइए ना, थोड़ा बाहर टहल के आता हूं, मैं साथ ले चलता हूं मंदिर चल के। फिर बातें आता है, दादी मेरे लिए कर देना पड़ेगा, और दादी कर देती है। और दादी बेटे को भी डांटेगी, वो बेटे के लिए इतना ही नहीं करता। तो बच्चों को मालूम है कि कुछ काम करवाना है तो दादी से हो जाएगा, कुछ मम्मी से हो जाएगा, कुछ बड़े भाई से हो जाएगा, कुछ काम खुद का नहीं होने वाला है तो बहन को टाइट करो, और बहन को बोलो तुम आज बड़ा ड्रामा करो और करवा। बहन घर में अगर एक बार उसने हवा बना ली तो पापा की ताकत नहीं है कि वो मना कर सके। नाम बहन का, काम भाई का, यही होता है परिवार में। लेकिन मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है, जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सब बात करते हैं मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, तो उनके मन में रहता है कि मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। उसका तो बेटा यहां पहुंच गया, उसकी तो बेटी वहां पहुंच गई, और मैं ही हूं कुछ बोल नहीं पाया और मुझे घर आना। और फिर वहां जो सुना, बस सामने आप मिले नहीं कि मरे नहीं। समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं। और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखाया, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसी को डांटते रहते हैं कि तूने क्या सिखाया, ऐसे बुद्धू पैदा कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या। और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए।
अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो। हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक तो तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। उधारी चीजें मत थोपो। अगर ये हम कर लेते हैं तो, और मैं अभिभावकों के रोल को बड़ा महत्व समझता हूं, वो बच्चे की केयर करे, दबाव न डाले। ये अंक वगैरह तो जिंदगी नहीं होती है जी। क्या एक एग्जाम आपको दुनिया में बहुत लोग मिले होंगे। अब आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, उनका तो फाइटर प्लेन के पायलट बनने का इरादा था, फेल हो गए। क्या जिंदगी पूरी हो गई क्या? वहां फेल हो गए तो देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल जाए जी, देश को एक उत्तम राष्ट्रपति। जिंदगी ये माँ बाप के दिलो दिमाग में ये बार बार वातावरण बनना चाहिए। अभिभावकों ने भी करना चाहिए। अगर ये रहता है तो मैं समझता हूं कि ये जो घर का तनाव है, और उस तनाव समस्या बन गया है, ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। और आप 90 लाओ तो पूछेंगे 95 क्यों नहीं लाए। 95 लाएंगे तो बोले देखो उसका तो 95 आया, तूने क्या कमाल कर दी। अगर आप 97 लाए, अब क्या है, अब तो 80% बच्चे 97 लाते, तू कौन सा बड़ा 30 मार्क की करता है। आज हम हिम्मत नहीं कर सकते पूछने की कि आपका क्या हुआ था। और इसलिए एक खुलापन, एक तंदुरुस्त वातावरण परिवार में रहे, और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, सामान्य रूप से ऐसा रहना चाहिए। हमारी कि एग्जाम्स के टाइम पे जो बाकी चीजों में हमें डिस्ट्रैक्शन होता है उससे कैसे बचा जाए, और फोन का कम से कम यूज कैसे किया जाए ताकि हम स्टडीज पे फोकस कर सकें। माननीय, कृपया इन्हें और सबको इस बारे में कुछ गाइडेंस दें। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी आप जब देखते हो, आपकी भी शिकायत होगी ना। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह फिर उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को टीवी बंद कर, मुझे रिलैक्स महसूस करते हो क्या। तो मैं जैसे ही डिफोकस होता हूं, सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों, अगर आपका कोई आज के युग के जमाने में अगर डिसेक्शन करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं। कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है, अग्नि, है ना। आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये हो जाओगे, लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है। आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं। मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है, उसके अंदर एक नई पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए।
कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए। कभी, अब मुझे बराबर याद है, मेरे यहाँ तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं एग्जाम के दिनों में भी मेरे गांव के तालाब में रेगुलर जाता था। मुझे वो फ्रेश कर देता था पानी। और इसलिए मैं मानता हूं कि सारी चीजों को एक जैसा, मैंने देखा है कि एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। आप अगर बोर्ड में है, टीवी बंद, दोस्त बंद, टहलना बंद, टेलीफोन बंद, बातचीत बंद। अमिताभ बच्चन होते तो कहते दरवाजा बंद। यही होता है ना। देखिए, इससे आप कभी परिणाम नहीं ला सकते। आप जिन जिंदगी की आदतों से पले बड़े हो, उसको मात्रा कम अधिक कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट बदल सकते हैं, लेकिन इससे अलग होकर के आप मानोगे आप कर पाओगे, संभव नहीं है। और इसलिए खेलने का शौक है, खेलिए। गीत गाने का शौक है, गाइए। सुनने का शौक है, सुनिए। जो आपको आनंद देता है, जो दोस्त मिलने से आपको एकदम से खुशी हो जाती है, उस दोस्त को 10 मिनट के लिए मिल लीजिए, बुला लीजिए। लेकिन डिफोकस किए बिना आप फोकस नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा गलती बड़ी ये हो जाती है कि हम फोकस करते हैं, और फिर स्थिति ये बन जाती है कि जो बेल को बांध देते हैं तो ऐसे ही घूमता रहता है। ये स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वयं को एक खुलापन छोड़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सब चीजों को काट करके अपने आप को अलग मत कीजिए, वरना आपको कभी भी फोकस करने की संभावना ही बचेगी नहीं। और इसलिए मेरा आग्रह है, फोकस तब होता है जब आप डिफोकस करना सीखते हैं। और डिफोकस करने के लिए आपके बचपन की जो आदतें हैं वो आपको बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। उसी के साथ जुड़ जाइए, उसी के साथ कुछ पल जी लीजिए, आपको परिणाम मिलेगा। माननीय, हम भारतवासी आभारी हैं कि आपने भारतीय परंपरा योग को विश्व में स्थापित किया है, और हम गर्वित भी हैं। बच्चों में, स्टूडेंट्स में काफी जागरूकता आई है योग के बारे में। दीप्शी ग्रोवर दिल्ली से हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं और इस समय वो यहाँ पर हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं दीप्शी ग्रोवर दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि परीक्षा के तनावपूर्ण दिनों में योग हमारी किस तरह सहायता करता है? क्योंकि आप स्वयं योग करते हैं, हम विद्यार्थियों के लिए कुछ आसन बताएं। धन्यवाद। माननीय, टाइम्स नाउ टीवी चैनल के जरिए सारिका माकन ने आपसे पूछा है कि आई एम इन क्लास 12 विद नॉन मेडिकल स्ट्रीम, काइंडली एडवाइज सम पर्टिकुलर योगा आसनास व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड improve concentration. I have also read your book Exam Warriors. I think it shares some great tips with exam psychologically. कृपया इन सवालों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। मैं मोहम्मद जलाल, केंद्रीय विद्यालय IIT देहरादून की छात्रा, आपसे पूछना चाहती हूँ कि तथ्यों के मूल्यांकन के अनुसार हमें यह ज्ञात होता है कि 20% सफलता इमोशनल क्वेश्चन के कारण मिलती है, परंतु हम विद्यार्थी EQ को कहीं ना कहीं भूलकर IQ को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं। अतः महोदय, आपसे यह गुजारिश है कि आप हमें EQ और IQ में समान रूप से संतुलन कैसे बैठाएं, मैं सलाह दें, ताकि आगे आने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं और जीवन में आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। धन्यवाद। एक ऐसा सवाल है जो सीधा एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन IQ और EQ ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन किसी को पूछोगे भी IQ क्या है, EQ क्या है, नहीं बोले वो इंटेलिजेंट है IQ, EQ क्या, तो यार सुना है होगा कुछ,
कुछ इमोशनल कुछ चलता है। मैं बड़ी सरल रीत से बताऊं आपको। एक तो ये बताया जाता है कि आईक्यू का खिलने का जो सबसे बड़ा अवसर होता है, जो विज्ञान से संबंधित लोगों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल के पहले ही ये सब ऑलरेडी पनपना हो जाता है, बाद में तो उसका प्रगतिकरण होता है। कोई बालक अपनी माँ उसको झूले में सुला करके गई है और उसको सुला करके उस झूले के ऊपर एक घुंघरू बंधा हुआ है और माँ ऐसे थप मार करके जाती है, उसमें से घुंघरू की आवाज आती है। तो आपने देखा होगा वो बच्चा ये देखता है, 2 महीने 3 महीने 5 महीने का बच्चा होगा, वो देखता है कि माँ ने ऐसा किया तो घुंघरू की आवाज आई। अब माँ तो अपने काम में लग गई, लेकिन वो अपने पैर ऊपर कर करके उस तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि घुंघरू बच जाए। दैट इज आईक्यू। समझ आया? उस बच्चे ने 3 महीने बच्चे ने उसको पकड़ लिया और उस घुंघरू उसने कोशिश करता है, सोए सोए पैर मार के ऊपर ऊपर कोशिश करता रहेगा और उसी में वो कंसंट्रेशन होगा उसका, क्योंकि उसने देखा है कि माँ ने ऐसा किया था, घुंघरू की आवाज आई थी जो अच्छी लगी थी, वो उसी को करता रहता। वो हो गया आईक्यू। अब मान लीजिए माँ को बहुत काम है, बेटे को सो जाए तो अच्छा है, तो बढ़िया सा आवाज हो किसी की, बहुत ही अच्छा, लेकिन माँ तुरंत किचन से दौड़ के आती है। ये जो उसके इमोशंस हैं, आवाज नहीं, शब्द नहीं, कुछ नहीं, जो इमोशंस कनेक्ट है, और इसलिए आई और ईक्यू दोनों का जिंदगी में संतुलित विकास अनिवार्य है। और यह भी सही है कि ईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। ईक्यू इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी भी ईक्यू कैसे बढ़ता है? अगर हम ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो चलो भाई, किसी ने कहा था सब ब्लड डोनेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब ब्लड डोनेशन करता हूं, लेकिन पता चलता है कि यार मैं उसको पहचानता था, मेरा ब्लड तो उस दिन उसको काम आ गया, उसकी जिंदगी बन गई, ईक्यू में कन्वर्ट हो गया। क्यों? मेरा इमोशनल बॉन्डिंग था। हम जितनी संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक टीचर से पूछा था, ऐसे ही बातें कर रहा था, तो उनका एक नियम था कि वो किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो बच्चों को आग्रह करते थे कि तुम आज अपने परिवार के साथ या किसी अस्पताल जाकर के आओगे, लेकिन स्कूल आने से पहले तुम्हारा जन्मदिन मैं तब मानूंगा कि तुम जाकर के आए हो। उन्होंने अपने क्लास के बच्चों को आदत डाली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है? उसने कहा साहब, मैं तो उसके आईक्यू के लिए क्लास में बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन वो उसकी जिंदगी में उतना काम नहीं आएगा। और इसलिए मैं बच्चों का जन्मदिन क्लासरूम में ताली बजा करके, केक काट करके, चॉकलेट बांट करके नहीं करता हूं। मैं उसको जहां दर्द है, दुख है, पीड़ा है, संवेदना है, उस जगह पर जाने के लिए प्रेरित करता हूं। और वो उस दिन जन्मदिन होने के कारण बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस होता है, उसकी सारी मनस्थिति स्वकेंद्रित होती है, और इसलिए वो जो भी करता है वो बहुत ताकत के साथ रजिस्टर होता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जिस दिन उसकी सबसे जागृत अवस्था है, उस दिन उसको इन संवेदनाओं से जोड़ूं। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम जीवन में ऐसा कुछ समय ऐसे लोगों के बीच में बिताएं, कभी उनको पूछे तो। हमने कभी, हमारे यहां जो अखबार डालने के लिए आता होगा ना, कभी उसका नाम नहीं पूछा होगा। 2 दिन नहीं आए तो कभी नहीं पूछा होगा, अरे भाई तुम बीमार तो नहीं थे, क्या हो गया?
कभी एग्जाम हुई तो आपने उसको नहीं पूछा होगा, अच्छा आपके बच्चों भी एग्जाम होती होगी, कैसे करते हैं आप, नहीं पूछा होगा। दूध सुबह दूध देने आता है, हमको नाम भी पता नहीं होगा उसका नाम क्या है। जो ड्राइवर हमें स्कूल ले जाता है, हम 20-30 बच्चे स्कूल में बैठते हैं, हमारे में से किसी को उस ड्राइवर का नाम मालूम नहीं होगा, इतना ही पता होगा ड्राइवर भाई, ड्राइवर अंकल। कभी पूछा कि आप यहां कैसे आए, बच्चे क्या कर रहे हैं? आप देखिए, आपका खुद का सोचने का तरीका बदल जाएगा। हम समाज के लोगों से जितने संपर्क में आते हैं, इतना हमारा IQ बहुत ही शार्पन हो जाता है, बहुत शार्पन हो जाता है, जो हमारी जिंदगी के एक सेंस ऑफ मिशन जिसको कहें, सेंस ऑफ मिशन को बनाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और IQ सक्सेस दे सकता है, लेकिन सेंस ऑफ मिशन देने में IQ बहुत बड़ा रोल करता है। और हमने, अभिभावकों ने, टीचर्स ने EQ के प्रति लगातार फोकस रखना चाहिए, तब जाकर के खेल के मैदान में प्रतिस्पर्धी मात दे दी, विजय निश्चित हो गई, लेकिन प्रतिस्पर्धी अगर गिर गया तो मैं अपना विजय की चिंता किए बिना उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ में पहुंच जाता हूं, तुरंत उसको खड़ा कर देता हूं। मैदान में हूं, हार जीत का फैसला होने वाला है, लेकिन मेरी मानवीय संवेदना कहती है, अरे छोड़ो खेल, वो गिर गया है, मैं पहले इसकी मदद कर दूं। वो IQ आपको जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत देता है, और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। माननीय, जो आसन के बारे में, योग आसन के बारे में आपसे पूछा गया है कि कुछ आसन बताइए जिससे कि स्ट्रेस कम हो। देखिए, योग आसन के संबंध में एक जो भ्रम है कि इस आसन से ऐसा होता है, इस आसन से होता है, उसके साथ एक विज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन आप शुरुआत, आपको जो आसन अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्ट देता है, उसी से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि ताड़ासन, आप हैरान होंगे, इन दिनों दुनिया के कई देशों में परिवारों में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन को रेगुलराइज कर दिया गया है। और आपने भी देखा होगा, घर में जब 13-14 साल के हो जाते और अपना दोस्त थोड़ा ऊंचा हो गया तो अपना भी मन करता है एकदम खड़े हो जाते, ताड़ासन करने लग जाते हैं। मन में तो ये रहता है कि मैं ताड़ासन कर रहा हूं तो शायद मेरी हाइट बढ़ेगी। हकीकत में उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो आपको, आपके शरीर, मन, बुद्धि एक साथ कैसे काम करते हैं वो सिखाती है। आप ठीक से कर रहे हैं नहीं, आपको पता चलेगा। आप लोग, यहां मैं कहता नहीं, प्रयोग करना, 2-3 दोस्त मिलकर के करना, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप खड़े रहिए, सबको पूछोगे तो जवाब एक ही आएगा, सबको अपने पैर पे खड़े हैं, सही है ना? ऐसे ही मैं खड़ा हूं तो आप सब यही कहेंगे ना कि मैं पैर पे खड़ा हूं। क्या कहेंगे? मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, वही कहेंगे ना। लेकिन आप ऑफलाइन तो नहीं है ना। अगर बारीकी से देखोगे, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं। अगर जैसे ही बॉडी की तरफ थोड़ा नजर करोगे तो आपको ध्यान आएगा, नहीं, मेरा तो पूरा वेट मेरी कमर पे है। अगर वहां कॉन्शियस होकर के थोड़ा उसको रिलैक्स किया तो ध्यान आएगा, नहीं नहीं, मेरा पूरा बॉडी वेट तो बटक्स पे है। फिर वहां रिलैक्सेशन किया तो ध्यान आएगा कि नहीं नहीं, मेरा तो पूरा बॉडी वेट नी पे आके अटका हुआ। फिर एंकल पर आके, बहुत बाद में पता चलेगा कि तलवे पर वेट आता है। इट मे टेक 1 or 2 मिनट। और यूं ही खड़े हैं तो आपको भी पता नहीं है कि आप पैरों पे खड़े हैं कि कमर पे खड़े हैं। आप आज ही प्रयोग यहां से निकल करके 3 नौजवान खड़े करके एक दूसरे का टेस्ट कीजिए। अब ये आप सीख गए तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। अब शवासन है, योग निद्रा है, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है जो योग निद्रा के द्वारा, इसकी सीढ़ी अवेलेबल होती है, आप इस सीढ़ी को के आधार पर खुद भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी कम नींद भी आपको साउंड स्लीप देती है। और मैं मानता हूं कि नींद बहुत आवश्यक है।
इसका मतलब है कि वे सोते ही रहे हैं और घर में सब गए तो कुंभकर्ण है, ये ऐसा नहीं। क्वालिटी स्लीप, मैं इतना सारा जिम्मा लेकर के काम कर रहा हूं, आप जानते होंगे क्या कुछ नहीं होता। बिस्तर पर जाने के बाद शायद 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता है, 30 सेकंड ऐसे धड़ाम से सो जाता हूं। पूरा दिन भर काम में लगा रहता हूं तो देरी नहीं लगती, लेकिन जब उठता हूं तब एकदम क्वालिटी नींद पूरी करके उठता हूं, घंटे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, अपनी नींद को भी वेरीफाई कीजिए, देखते रहिए। योग निद्रा का प्रयोग ऐसा है, YouTube पर जाएंगे तो वहां भी अवेलेबल होती है। आप योग निद्रा, और बड़ा सिंपल प्रयोग है, ऐसे ही सोए सोए ट्रैवलिंग करना होता है। कभी पैर के पास चले गए, फिर हाथ के पास चले गए, दिमाग के पास चले गए, कान के पास चले गए, खुद के ही ट्रैवलिंग करना होता है। 1-2 मिनट में एकदम से गहरी नींद में चले जाते हैं, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और इसलिए कोई पर्टिकुलर आसन के पीछे अभी मत पड़िए, जो आपको कंफर्ट है उसी को। अच्छा, कुछ लोगों की सोच यह है कि योग है बॉडी बेंडिंग, इस चक्कर में मत पड़िए, जहां जाए अटक जाइए, उसी को एंजॉय कीजिए, स्ट्रेस को एंजॉय कीजिए, पेन को एंजॉय कीजिए। आप पोजीशन पाने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप देखिए, आपको एक अलग अनुभूति होगी। बच्चों, आपको भी और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी बताते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश भर के लाखों हजारों बच्चे इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर बातें शेयर कर रहे हैं, पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं, और सब में इतना उमंग, इतनी उल्लास और इतनी खुशी है, और सभी बहुत उत्साहित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस इंटरैक्शन से और उनकी बातचीत से। कुशाग्र पायल शिलोंग से छात्र हैं और इनका भी प्रश्न हमारे सामने है। Good morning, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। I am Kushagr Payal of class 10 from Assam Rifles Public School, Shillong. Sir, my question to you is that what role do you suggest for the teachers to play in developing confidence among students facing in the examination? धन्यवाद सर। शिक्षकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या रोल निभाना चाहिए? माननीय, हम सबको इस बारे में कुछ बताएं। वैसे शिक्षक अपना दायित्व निभाते ही हैं, इसलिए मुझे उनको कोई ज्यादा एडवाइस करनी नहीं है, लेकिन वक्त काफी बदल चुका है। एक समय ऐसा था, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कि परिवार में अगर कोई अच्छी चीज खाने पे बनती थी तो माँ को मन करता था कि तेरे टीचर को जरा उनके घर थोड़ा दे करके आ जाओ। ये ठीक है, मेरे यहाँ मेरे टीचर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे, लेकिन माँ का मन करता था कि कुछ बना है अपने घर में, तेरे टीचर को दे आओ, कुछ अच्छी चीज हुई है टीचर को बता दो। टीचर एक प्रकार से फैमिली मेंबर हुआ करते थे। कभी कभी माँ बाप जो बात बच्चे को नहीं बता सकते थे तो माँ बाप टीचर को कहते थे और उसको कहते थे कि जरा आप उसको थोड़ा समझाइए ना, और टीचर टीचिंग के सिवाय ये काम करते थे। माँ बाप का टीचर पर एक भरोसा हुआ करता था कि जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हम अपने बेटे से नहीं कर सकते, वो टीचर कर पाएंगे। आज धीरे धीरे स्थिति ये है कि बहुत से माँ बाप शायद टीचर को पूरी तरह जानते भी नहीं है, और जानते तो तब है कि जब बेटा आकर के शिकायत कर दे कि टीचर ने मुझे डांट दिया, तो दूसरे दिन गुस्सा करके माँ बाप स्कूल पहुंच जाएंगे और वो टीचर का लेफ्ट राइट करके छोड़ेंगे, तब जाके पता चलता है ये उसका टीचर है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे परिवार में फैमिली डॉक्टर, वो परिवार के हर लोगों की सेहत के विषय में जानकार होता है, वैसे टीचर पूरे परिवार के लोगों को बराबर इकोसिस्टम जानता था और उसके अनुसार वो बच्चे को गाइड करता था, हाथ पकड़ के चलाता था, उसका परिणाम मिलता था। आज वो एक कट हो गया है। मैं सभी टीचर से चाहूंगा कि वे सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़े, उसके यार दोस्त,
उसके शौक, उसकी प्रवृत्ति, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, तब जाकर के उस बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना उनको सरलता से आ जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा को जाना है। आप देखिए, मुझे बराबर याद है, मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं राजनीति में नहीं था, एक स्कूल ने फंक्शन में मुझे बुलाया था, स्कूल के 25 साल हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं वहां टीचर से भी बात करना चाहूंगा, अलग से मुझे थोड़ा समय मिले। तो मैं टीचर से बैठा और मैंने उन टीचर्स को पूछा, बड़ी स्कूल थी, काफी नामांकित स्कूल थी। मैं उन टीचर्स के साथ बैठा, मैंने उनको पूछा कि भाई आप में से कोई 20 साल से वैसे कितने विद्यार्थी हैं कि जिनका नाम लेते ही आपको गर्व महसूस होता है और आप महसूस करते हैं कि मेरी स्कूल का बच्चा था, ये मेरे क्लास का बच्चा था, ये मेरे सब्जेक्ट का स्टूडेंट था और उसने जिंदगी में ऐसा नाम कमाया है। आपको कोई याद है क्या? और आप हैरान हो जाएंगे, कोई मुझे बता नहीं पाए, कोई बता नहीं पाए। मैंने कहा कि आप में से कितनी डिग्रियां लेकर के निकले, उसके बजाय कितनों की जिंदगी बनी। अगर ये आपका क्षेत्र नहीं है तो फिर शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और ये बात उन टीचरों को छू गई। फिर मैंने कहा बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके स्कूल के कोई स्टूडेंट है जो जेल में है? चौंक गए वो, उनकी मुंडी नीची हो गई, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने 2 एक्सट्रीम सवाल पूछे थे उन टीचर्स को। अगर मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा कभी किसी बुरे काम में नाम सुनाई दे तो टीचर के नाते मुझे चोट पहुंचनी चाहिए। और मेरे हाथ से निकला हुआ बच्चा जब जिंदगी में कुछ प्राप्त करता है वो दिन मेरे लिए सुहाना हो, ये टीचर के मन का भाव होना चाहिए, तब जाकर के। और मैंने ऐसे टीचर देखे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन की एक इच्छा थी, क्योंकि मैं घर छोड़ करके 30-40 साल बाहर रहा था, मैं कभी किसी को मिला नहीं था, एक गुमनाम सी जिंदगी में चला गया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गया तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मेरे सभी टीचर को बुलाऊं। तो मैंने सूची बनाना शुरू किया, मेरे अफसरों को काम पे लगाया। जो बचपन में जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था उनकी आयु करीब 96 हो गई थी। सबकी सूची बनाई, सबको मैंने एक कार्यक्रम में इकट्ठा किया, सार्वजनिक तौर पर मैंने उनका सम्मान किया। और मेरे मन को एक संतोष हुआ कि मेरे टीचर का मेरी जिंदगी में, तो जैसे टीचर से हमारा भाव है वैसा हमारे लिए भी हमारे टीचर के प्रति भाव होना चाहिए। हम टीचर, वो तो सरकारी नौकरी करता है या उसको तनख्वाह मिलता है, उसकी जिम्मेवारी है पढ़ाएं, जी नहीं। मेरे माँ बाप के बाद यही तो है जिसके साथ मैं खुल करके बातें कर सकता हूं। तो एक तरफ हमारी भी जिम्मेवारी है, दूसरी तरफ हमारे टीचर्स की भी जिम्मेवारी है। इन दोनों को हमेशा, आपने देखा होगा कि दुनिया में भी टीचर होते हैं, लेकिन वहां शब्द प्रयोग होता है गुरु, गुरु शब्द, गुरु शिष्य परंपरा। आपने देखा होगा कि ये गुरु ऐसे होते हैं, खुद के संतानों की लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया, लेकिन अपने शिष्य के लिए वो अपना जीवन खपा देते हैं। अगर वो अच्छा रेसलर है और उस गुरु के पास ट्रेनिंग ली है तो उस रेसलर के लिए वो गुरु सुबह 4 बजे उठ करके मेहनत करते हैं। अपने बच्चे बीमार होंगे तो भी शायद 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन अपना एक शिष्य अच्छा रेसलर बने। ये जो गुरु शिष्य संबंध है जिसमें गुरु अपना जीवन खपा देते हैं, ये आज भी खेल जगत में हमें देखने को मिलता है। सक्सेस पाता है तो वो सबसे पहले अपने गुरु को याद करता है, और एक गुरु का शिष्य जब सक्सेस पाता है तो गुरु उस शिष्य को याद करता है। ये नाता शिक्षा जगत में भी पनपता रहना चाहिए। शिक्षक भी हम लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं, हम भी म्यूचुअल
अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो मैं समझता हूं कि दोनों स्थितियां हमें उपकारक निकलेंगी। नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सवाल पूछा है जय मिस्त्री ने। सर, व्हाट शुड बी द रूटीन ऑफ द डे एंड नाइट? आप भी अपने दोस्तों को कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या? 24 घंटे मिले। उसका कारण यह है कि उसको अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं। टाइम का मिसमैनेजमेंट की शुरुआत आपकी प्रायोरिटी का आपका अज्ञान है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सबसे अच्छा उपयोग किन किन चीजों में है और वो कौन सी चीजें हैं जो मैं समय को बर्बाद करता हूं। मैं बिजी होता हूं, लगातार काम करता हूं, लेकिन जो करना चाहिए वो करता नहीं और नहीं करना चाहिए वो पहले करता हूं, और उसी के कारण मेरा समय के साथ हमेशा तनाव रहता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम आता है। समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लचीलापन चाहिए कि चलो ठीक है, अब ये आ गया है तो कुछ समय यहां निकाल दो, लेकिन मैं बाकी समय को एडजस्ट करूं। आपको खुद को लगना चाहिए, वरना अभी मैंने ये काम तय किया, मैं ये नहीं करूंगा, अभी मुझे होमवर्क करना है, मैं ये नहीं करूंगा। सहज लचीलापन के साथ, एनवायरमेंट के साथ, हम कॉन्फ्लिक्ट किए बिना, हम जिस माहौल में जी रहे हैं उस माहौल में मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। जीरो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आए। करूं या न करूं के बीच में होना चाहिए। अगर ये हम साइकिल बना करके करते हैं तो आप देखिए कि आपकी दिनचर्या ठीक से चलेगी। कुछ लोग हैं डेली डायरी लिखने की आदत नहीं हो, ऐसे बहुत लोग होंगे, जरूर निकले। एक टेम्पररी आप एक महीने के लिए लिखिए, और महीने भर आप अपने लिए, किसी के लिए नहीं, और जरा भी छुपाए बिना आप लिखिए। रात को लिखिए, कल वो एक डायरी अलग रखिए, उसको हाथ पर लगाइए, लिख लिया। दूसरे दिन दूसरी डायरी सुबह लीजिए, और जैसे जैसे करते जाए लिखते जाइए, फिर रख दीजिए। रात को फिर वो डायरी निकालिए, कल क्या करूंगा लिख दीजिए। महीने पर दोनों डायरियों को अलग रखने दीजिए। एक महीने के बाद दोनों डायरियों को मैच कीजिए, और रात को आपने क्या सोचा था, दिन भर क्या किया, आपको देखोगे 80% चीजें आपने वो की होगी जो आपने तय किया था उससे विपरीत होगी। आपको समझ आएगा, अरे मैं कैसा हूं, मैं तो बहुत बिजी था। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप ही अपने आप को एकदम से करेक्ट कर सकते हो। और बड़ा सरल तरीका है, बड़ा सरल तरीका है। आप कल क्या करना है वो लिख लीजिए, और क्या हुआ वो रात को फिर से लिख लीजिए। दोनों डायरी अलग रखिए, दोनों डायरियों को बार बार मत देखिए, एक महीने के बाद ही देखिए, आपके सारे सुधार अपने आप हो जाएंगे। इंडिया टीवी के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे, आइए सुनिए। My name is Gaurav Singh and I'm a student of class 11th, Noida Public School Sector 23. मेरा मोदी जी से बस एक ही सवाल है कि हमारे पास आज की डेट में करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इवन आई हैव चूजन वन एज ह्यूमैनिटीज़, बट इट्स कि इतना वास्ट हमारे पास जितना वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं ही क्या कोई भी स्टूडेंट एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि उसको अपने करियर को किस चीज़ को लेकर के चूज करना चाहिए, क्या ध्यान में रख करके चूज करना चाहिए, उसको फ्यूचर में उस करियर के थ्रू सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। तो मेरी बस आपसे एक जनरल क्वेश्चन है कि मुझे क्या क्या ध्यान में रख करके अपना करियर चूज करना चाहिए। इस बारे में प्रेरणा दें। बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दूंगा। ये सारी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं।
जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं। एक प्रकार से आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके, और इसलिए आपकी सारी जिंदगी सिकुड़ती चली जाती है। जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है ये, क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइम की दुनिया नहीं, ट्राइम की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं और बनते चलते हैं। आपको भी पता नहीं होता है क्या बनने निकले थे, क्यों बनने निकले थे। करते करते ही जो बन गए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं, फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, यार, दोस्त सब उसी में सिमट जाता है। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं। से अगर मान लीजिए आपने तय किया अभी मुझे मुंबई जाना है, फिर कार से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, चल करके जाऊंगा, दौड़ करके जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, सारी स्वतंत्रता खुली रहती है। और इसलिए आप मन में कुछ करने का इरादा रखिए, स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए, वो आपको एक नई ताकत देगी। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं, इनके मन में एक सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे लगता है कि अगले साल दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपकी लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पर पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं एक सवाल फिर से कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश, इतना मुझे पक्का लगता है अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की होती है। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप पढ़ सीखने की कोशिश करिए, पूरा फोकस लर्निंग पर रखिए, भीतर के विद्यार्थियों को जितना ऊर्जावान बना सकते हैं बनाते रहिए। यही जीवन का धर्म बना करके चलिए। एग्जाम और रिजल्ट और अंक ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपने काम किया है, जो रिजल्ट आएगा आएगा। अंक के हिसाब से चलने से हम शायद उस चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते जो पढ़ना चाहते हैं। राजनीति में भी मैं इसी सिद्धांत पे चलता हूं।
कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए जितना मेरे पास समय है, जितना हमारे पास शक्ति है, जितनी मेरे पास ऊर्जा है, जितनी मेरे पास दिमागी सामर्थ्य है, सब कुछ 125 करोड़ देशवासियों के लिए खपाता रहूं। हर पल समय का क्षण क्षण, शरीर का कांकण 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगाता रहूं। चुनाव आएंगे जाएंगे, वो तो सब बाय प्रोडक्ट होता है जी। और दूसरा, हम लोगों की तो स्थिति ऐसी है, आपकी तो एग्जाम साल में एक बार होती होगी, हमारी दिन में 24 घंटे होती है। और किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में एक नगर पालिका का चुनाव और हार गए तो ब्रेकिंग न्यूज होता है, ब्लो ऑन मोदी। और इसलिए और दूसरा है, कभी कभार मैं तो राजनीति में बहुत देर से आया हूं, बहुत लोगों की बात गले नहीं उतरती है। और दूसरा, मैं अभी भी एक प्रकार से राजनीति की व्यवस्था में हूं, लेकिन मन स्वभाव से राजनीति में नहीं हूं। मेरे वो नेचर में ही नहीं है, मेरे नेचर में कुछ करना है, बस करते रहना। लेकिन जब मैं राजनीति में नहीं था तो पुराने जमाने में जनसंघ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी और उनका दीपक नाम का निशान हुआ करता था। और वो पार्टी इतनी गरीब थी कि दीवार पर दीपक पेंट करने के लिए भी उनके पास बड़ा मुश्किल होता था। और गुजरात में चुनाव थे तो उन्होंने कोई 103 कैंडिडेट खड़े कर दिए और जो मिला, लड़ना तैयार हो, लो लड़ो, और खड़े हो गए सब लोग। 103 में से 99 का डिपॉजिट चला गया, डिपॉजिट जब्त हो गया। और चुनाव में, राजनीति में डिपॉजिट जब्त होना है ना, बहुत बुरा माना जाता है। 4 का बच गया। तो मुझे बराबर याद है कि जनसंघ वालों ने इन 4 लोगों का जो डिपॉजिट का पैसा वापस आया, उसकी एक बहुत बड़ी महफिल की, बड़ी पार्टी की और बड़ा आनंद से मिठाई बांट के खाई। क्यों? तो बोले 4 लोगों की डिपॉजिट बच गई है। ये जो मिजाज होता है वो वहां से यहां तक पहुंचाता है। अटल जी कहते थे, हार न मानूंगा, ये हार न मानूंगा जो जीजी बिछा होती है, ये हर एक के भीतर होनी चाहिए। और इसलिए आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मेरी बोर्ड के एग्जाम के लिए 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद मेरे साथ है, वो ही मेरी ताकत है, उसी के भरोसे में आगे चलता हूं। माननीय, ये आखिरी सवाल था, अपनी तरफ से आप कुछ संबोधित करना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल था जी। चलिए, हमारा एग्जामिनेशन का कार्यकाल बहुत लंबा चला। आप लोग अपने मन से तय करना 10 में से कितना मार्क देना है। तय कर लिया बिना कागज कलम? अच्छा दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत, मुझे हमेशा रहता है कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारत की विविधता, और तमिल भाषा बहुत कम लोगों को मालूम है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इतना सौंदर्य है उस भाषा में, लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूं मुझे आती नहीं है, बड़ा कम बोल लेता हूं, बस इनसे आगे जान जा पाता। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन बालकों से उनकी भाषा में मैं बात नहीं कर पाया हूं, मैं उनसे फिर एक बार क्षमा मांगूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यवस्था के तहत उन बालकों को भी अगर ये चीजें पसंद है, उनकी मातृभाषा में पहुंचाने का प्रयास हो। आप इतनी बड़ी मात्रा में आए और शायद भोजन भी छूट गया होगा आपका, तो मेरा ऐसा ही रहता है, जो कष्ट आप झेलते हैं वो कष्ट मैं भी झेलता हूं।
मैं फिर एक बार बहुत सारे देश भर के नौजवानों को, यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आए हुए सभी मेरे युवा साथियों को, आपको एक नया मित्र मिला है और मुझे करोड़ों करोड़ों नए मित्र मिले हैं। इस खुशी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। की वजह सभी भारतीयों का Parliamentary colleagues, distinguished members of the British Indian diaspora, ladies and gentlemen, welcome to the Royal Gallery. It is my enormous pleasure now to introduce Narendra Modi, the 15th Prime Minister of India. Today is special, and it's special for two reasons. First, this is a first. The first occasion upon which we will hear a speech by a serving Indian Prime Minister in our Parliament. Secondly, it is fitting that it takes place during Diwali, with the resonance which that entails for millions across this country, in India, and indeed throughout the world. What's more, today is New Year's Day. Saal Mubarak. Happy New Year. The ties between our two countries are so multiple, deep, and enduring that they frankly
elaboration or rehearsal this afternoon. Skeptics sometimes suggest that democracy is all but impossible to create or to maintain in countries of a certain size, degree of diversity, or level of economic development. Over the past 68 years, India has proved to be a standing rebuke to such skeptics. Democracy has to demonstrate that it can respect free speech and incorporate a true diversity of creeds, faiths, and orientations without diminishing or disrespecting any of them. With some 1.3 billion people and a burgeoning young population, India will become the most populous nation on our planet, well within the lifetimes of many people here present. And it is destined to become a leader in the world. Put bluntly, India is all of our futures. Preparing for such a prospect is a daunting challenge to which Prime Minister Modi has devoted great thought and attention. Friends and colleagues, Mr. Modi is known in Indian circles as Mr. Tech. He pioneered the expansion of the internet in Gujarat during his lengthy tenure as Chief Minister there. And in the past 18 months in Delhi, he has established a Digital India scheme and indeed created a network of smart cities. He has an astonishing 12 million followers on Twitter, and he is extremely comfortable communicating with fellow citizens via the medium of Google Hangouts on Android Lollipop. In a spirit of friendly competition, I'm sure that our own leaders in all parties will now strive to follow your example, sir. Mr. Modi has recently returned from taking Silicon Valley by storm, holding talks with, amongst others, Mr. Mark Zuckerberg of Facebook. It is reasonable to assume, Prime Minister, that you will find events today in this historic setting something of a contrast. The contrast is not, however, a contradiction. We welcome you today, not principally in order to commemorate the past, but rather to herald the present and to gaze to the future. Prime Minister, thank you for coming. It is my pleasure to invite you to speak to us. Lord Speaker, Mr. Speaker, Mr. Prime Minister, I'm delighted to be in London. Even in this globalized world, the standard of our times. The city has embraced the world's diversity and represent the finest in human achievements. Truly honored to speak in the British Parliament. Mr. Speaker, thank you for opening the doors to us here in this magnificent setting of the Royal Court. I know that the Parliament is not in session. Prime Minister Cameron looks relaxed and relieved. I know that you are hosting me this evening. But I also know that you will understand
if I am fair to both sides of the floor, especially since British MPs of Indian origin are evenly balanced and the opposition MPs. So I also extend my good wishes to the Labour. Indeed, since these are still early days after the election, my warm congratulations to the members of the House and greetings to the eminent leaders of Britain and great friends of India present here today. So much of the modern history of India is linked to this building. So much history looms across our relationship. There are others who have spoken forcefully on the dates and dues of history. I will only say that many freedom fighters of India found their calling in the institutions of Britain. And many makers of modern India, including several of my distinguished predecessors, from Jawaharlal Nehru to Dr. Manmohan Singh, passed through their doors. There are many things on which it is hard to tell anymore if they are British or Indian. The Jaguar of the Scotland Yard, for example, the Brookmont Tea, or my friend, late Lord Ghulam Noon's curry. And our strongest debates are whether the Lord's pitch swings unfairly or the wicket at Eden Garden cracks too early. And we love the Bhangra rap from London, just as you like the English novel from India. On the way to this event, Prime Minister Cameron and I paid homage to Mahatma Gandhi outside the Parliament. I was reminded of a question I was asked on a tour abroad. How is it that the statue of Gandhi stands outside the British Parliament? To that question, my answer is, the British are wise enough to recognize his greatness. Indians are generous enough to share him. We are both fortunate enough to have been touched by his life and mission. And we are both smart enough to use the strengths of our connected histories to power the future of our relationship. So I stand here today not as a visiting head of government, given the honor to speak in this temple of democracy. I'm here as a representative of a fellow institution and a shared traditions. And tomorrow, Prime Minister and I will be at the Wembley. Even in India, every young footballer wants to bend it like back home. Wembley will be a celebration of 1.5 million threads of life that binds us. 1.5 million people proud of their heritage in India, proud of their home in Britain. It will be an expression of joy for all that we share. Values, institutions, political system, sports, culture, and art. And it will be recognition of our vibrant partnership
and a shared future. The United Kingdom is the third largest investor in India behind Singapore and Mauritius. India is the third largest source of foreign direct investment projects in the United Kingdom. Indians invest more in Britain than in the rest of European Union combined. It is not because they want to save on interpretation costs, but because they find an environment that is welcoming and familiar. It takes an Indian icon, Tata, to run a British icon and become your nation's largest private sector employer. The UK remains a preferred destination for India students. And I am pleased that an Indian company is taking 1,000 British students to India to skill them in information technology. We are working together in the most advanced area of science and technology. We are finding a solution to the enduring human problems of food and health security and seeking answer to emerging challenges like climate change. Our security agencies work together so that our children return home safe and our increasingly networked lives are not prey to the threats on site. This year alone, we have had 3 exercises. And in the international arena, your support has made it more possible for India to take her rightful place in global institutions and regimes. And it has helped us both advance our common interests. Mr. Speaker, strong as our partnership is, for relationship such as ours, we must set higher ambitions. We are 2 democracies, 2 strong economies, and 2 innovative societies. We have the comfort of familiarity and the partnership. Britain's research is impressive. Its influence on the future of the global economy remains strong. And Mr. Speaker, India is a new bright spot of hope and opportunity for the world. It is not just the universal judgment of international institutions. It is not just the logic of numbers. A nation of 1.25 billion people with 800 million under the age of 35 years. This optimism comes from the energy and enterprise of our youth, eager for change and confident of achieving it. It is the result of bold reform our laws, policies, institutions, and processes. We are igniting the engines of our manufacturing sector, making our farms more productive and more resilient, making our services more innovative and efficient, moving with urgency on building global skills for our youth, creating a revolution in startup enterprises, and building the next generation infrastructure that will have a light footprint on the earth. Our momentum comes not just from the growth we pursue, but from the transformation that we seek in the quality of life for every citizen. Much of India that we dream of, housing, power, water and sanitation for all,
bank accounts and insurance for every citizen, connected and prosperous villages, and smart and sustainable cities. These are goals with a definite date, not just a mirage of hope. And inspired by Gandhiji, the change has begun with us, the way the government works. There is transparency and accountability in governance. There is boldness and speed in decisions. Federalism is no longer the fault line of center-state relation, but the definition of a new partnership of Team India. Citizens now have the ease of trust, not the burden of proof and processes. Business find an in a nation connected by cell phones. Digital India is transforming the interface between government and people. So, Mr. Speaker, with apologies to poet T.S. Eliot, we will not let the shadow fall between the idea and reality. If you visit India, you will experience the wind of change. It is reflected in the surge of investments from around the world, enhanced stability of our economy. In 190 million new bank accounts of hope and inclusion. In the increase in our growth to nearly 7.5% per year. And in the sharp rise in our ranking on ease of doing business. And the motto of Sabka Saath, Sabka Vikas is our vision of a nation in which every citizen belongs, participates and prospers. It is not just a call for economic inclusion. It is also a celebration of our diversity, the creed for social harmony and a commitment to individual liberties and rights. This is the timeless ethos of our culture. This is the basis of our constitution, and this will be the foundation of our future. Mr. Speaker, members and friends, the progress of India is the destiny of 1/6 humanity, and it will also mean a world more confident of its prosperity and more secure about its future. It is also natural and inevitable that our economic relations will grow by leaps and bounds, will form unbeatable partnership if we combine our unique strength and the size and the scale of opportunities in India. We will see more investment and trade. We will open new doors in the service sector, more here and in India. In defense equipment and technology, we will work together on renewable and nuclear energy. We will explore the mysteries of science and harness the power of technology and innovation. We will realize the opportunities of the digital world. Our youth will learn more from and with each other. But a relationship as rich as this, with so much promise as ours, cannot be measured only in terms of our mutual prosperity. Mr. Speaker, ours is an age of multiple transition in the world. We are yet to fully comprehend the future unfolding before us. And in the previous ages, it will be different from the world we know. So in the uncharted waters of our uncertain times, we must together help steer a steady course of this world in the direction for in that lies not just the success of our two nations,
but also the promise of the world that we desire. We have the strength of our partnership and the membership of the United Nations, the Commonwealth, and the G20. We live instability in a distant region quickly reaches our doorsteps. We see this in the challenges of radicalization and refugees. The fault lines are shifting from the boundaries of nations into the web of our societies and the streets of our cities. And terrorism and extremism are a global force that are larger than their changing names, groups, territories, and targets. The world must speak in one voice and act in unison to combat this challenge of our times. We must adopt a comprehensive convention on international terrorism in the United Nations without delay. There should be no distinction between terrorist groups or discrimination between nations. There should be a resolve to isolate those who harbor terrorists and willingness to stand with nations that will fight them honestly. And we need a social movement against extremism in countries where it is most prevalent, and every effort to de-link religion and terrorism. Oceans remain vital for our prosperity. Now we have to also secure our cyber and outer space. Our interests are aligned across many regions. We have a shared interest in stable, prosperous, and integrated South Asia round, together in a shared march to prosperity. We want an Afghanistan that is shaped by the dreams of the great Afghan people, not by irrational fears and overreaching ambitions of others. A peaceful, stable Indian Ocean region is vital for global commerce and prosperity. And the future of Asia-Pacific region will have profound impact on all of us. We both have huge stakes in West Asia and the Gulf. And in Africa, where amidst many challenges, we see so many promising signs of courage, wisdom, leadership, and enterprise. India had just held an Africa summit in which all 55 countries and 42 leaders participated. We must also cooperate to launch a low carbon age for a sustainable future for our planet. This is a global responsibility that we must assume in Paris later this month. The world has crafted a beautiful balance, common but differentiated responsibility and respective capabilities. Those who have the means and the know-how must help meet the universal aspirations of humanity for clean energy and a healthy environment. And when we speak of restraint, we must not only think of curbing fossil fuels, but also moderating our lifestyles. We must all do our part. For India, a target of 175 gigawatt of additional capacity in renewable energy by 2022 and reduction in emission intensity of 33 to 35% by 2030 are just two of the steps of a comprehensive strategy. I have also proposed to launch during the COP21 meeting an international solar alliance to make solar energy an integral part of our lives, even in the most unconnected villages. In Britain, we are more like to use an umbrella against rain than the sun. But my team defined
the membership of the Solar Alliance in more precise terms. We have to be located within the tropics, and we are pleased that the United Kingdom qualifies. So we look forward to an innovative Britain as a valuable partner in this endeavor. Prime Minister Cameron and I are indeed very pleased that an affordable and accessible clean energy is an important pillar of our relations. Mr. Speaker, this is a huge moment for our two great nations. So we must seize our opportunities, remove the obstacles to cooperation, instill full confidence in our relations, and remain sensitive to each other's interests. In doing so, we will transform our strategic partnership, and we will make this relationship count as one of the leading global partnerships. Ever so often, in the call of Britain's most famous bard, that we must seize the tide in the affairs of man, the world has sought the inspiration to act, and so must we. But in defining the purpose of our partnership, we must turn to a great son of India whose house in London I shall dedicate to the cause of social justice on Saturday. Dr. B.R. Ambedkar, whose 125th birth anniversary we are celebrating now, was not just an architect of India's constitution and our parliamentary democracy. He also stood for the upliftment of the weak, the oppressed, and the excluded. And he lifted us all to a higher cause in the service of humanity, to build a future of justice, equality, opportunity, and dignity for all humans, and peace among people. That is the cause to which India and the United Kingdom have dedicated themselves today. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you on behalf of everyone assembled, and particularly on behalf of the House of Lords, for your inspired and inspiring speech. Your presence here today gives Parliament a valuable opportunity to celebrate the unique relationship between the UK and India. And how appropriate to do so here in the Royal Gallery, where 85 years ago today, King George V opened the first London Round Table Conference. King George V opened the first London Round Table Conference. In this gallery, in 1930, he welcomed Indian and British leaders who had come together to discuss constitutional reform in India as a means of moving towards self-rule. And then the achievements of the Round Table Conference were honest. They did signal, in the words of Anthony MacDonald, the birth of a new peaceable. By bringing together British and Indian statesmen and rulers of Indian states and seating them at a round table thereby conferring equal status among all, the conferences took us a step forward towards the relationship we enjoy today as equal partners and friends, with not just a shared history, a shared language, and a shared culture, but also a shared respect. 85
visiting New Delhi, Kolkata, and Assam. I was deeply impressed with the number and scope of local enterprises which I saw there, from rugby clubs for street children to initiatives for reskilling women, from multicultural classes in primary schools to highly successful microfinance schemes. I was impressed too by the number of women engaged in politics at all levels. When I got to attend a comprehensive view of your vast and complex democracy, I believe that this is what lies at the heart of India's modern urgency and vitality, an entrepreneurial energy and a spirit of inclusivity which the UK also holds dear. Prime Minister Modi, it's been a great pleasure to host you here at Parliament today. I hope you'll be able to provide a taste of the wings of the London we will undoubtedly see at Wembley tomorrow. Thank you. Madam Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. Prime Minister, I welcome you to the House of Representatives chamber, and your address today is in the history of this House. I now call upon the Honourable the Prime Minister. Madam Speaker, Mr. President, it is long overdue for an Indian Prime Minister to address this Parliament, given that the leaders of the United States, China, Indonesia, Britain, Canada, Japan and New Zealand have already done so. But I am personally delighted that this omission is at last corrected. It is fitting that in the home of our democracy, we should be addressed by the leader of the world's largest democracy. Madam Speaker, there is so much that we can learn from a Prime Minister who must try to reach some 830 million voters. And whose mastery of electioneering has meant that in India's recent election, he was literally beamed into dozens of different rallies simultaneously all around the country. Prime Minister Modi is the first in decades with an absolute majority in the lower house, the Lok Sabha,
because he imbued his fellow citizens with the sure hope that tomorrow can be better than today. He gave credit for India's success to those who really deserved it. He told voters that their country belonged to them, not to their rulers or to their officials. And even here in Australia, the Modi campaign and victory inspired hope, because Australians too believe in work, family and community, in doing things for love, not just for money, and in living our ideals. Our two nations have much in common. We share an ocean, we share a language, we share a heritage as Westminster democracies enjoying freedom under the law. We even share the same national day, the 26th of January. Above all, we share a history. Way back in 1795, the very first cargo ever to be shipped out of New South Wales was mahogany and cedar bound for India. In the Gallipoli campaign that forged our nation, 5,000 Indians fought by our side, and Prime Minister Modi made a splendid presentation to me at the War Memorial this morning in their memory. The Australian Army and the Indian Army were brothers in arms at the Siege of Tobruk. As part of British Empire forces, our soldiers shared the tragedy of Singapore and the triumph at El Alamein. Australians admired the way India won independence, not by rejecting the values learned from Britain, but by appealing to them, not by fighting the colonisers, but by working on their conscience. Through all the troubles of partition and all the subsequent dashed hopes, India has magnificently maintained its democracy. And although India's GDP per person is still only about, growth is strong, its economic prospects are bright, and its population is likely to overtake China's in the next couple of decades. This is why people now speak of the Indo-Pacific as the focus of the world's economic dynamism. With China, India is the emerging superpower of Asia. The emerging Gandhi taught that the most powerful force is not weapons, but good example. I remember as a student in India reading Gandhi's autobiography, where he quotes a Gujarati poet: "For a bowl of water, give a goodly meal. For a kindly greeting, bow thee down with zeal. But the truly noble know all men as one, and return with gladness good for evil done." Mother Teresa taught that good words are next to nothing without good deeds. The religions of India taught inner peace in the face of adversity. This land of the most ancient spirituality, of the exotic and of the familiar, has always made an impression on me. That's why 30 years ago I spent 3 months backpacking from Mumbai to Rajasthan, to Delhi, to Kashmir, around much of Bihar and back to Mumbai. Australia's second Prime Minister, Alfred Deakin, had also travelled to India, and he wrote way back in 1893 that India is truly a land of wonders and extremes, a country of contrasts and contradictions, of splendour and poverty, profusion and barrenness, vicissitude and adventure. 100 years ago, Deakin wanted Indian students to study in Australia, writing that Australia and India have much to teach each other. And that's exactly what's now happening. For over a decade, up to 40,000 Indian students have been in Australia at any one time. And from next year, under the new Colombo plan, Australia will be returning the compliment by sending thousands of our own
best and brightest to study at the universities of India. Madam Speaker, this is a sign that we are finally grasping the opportunities that India presents. It was Prime Minister Howard who once said that Australia and India had so much in common, but little. Australia welcomes India's strength in the Indian Ocean. Australia admires Prime Minister's invitation to come make in India, which echoes our own determination that Australia will be open for business. But despite that, regrettably, Australia only did $15 billion worth of business with India last year, and that hardly does justice to our two countries' potential. We want to be a dependable source of energy security, of resource security, and of food security for India. If all goes to plan, next year an Indian company will begin Australia's largest ever coal development, which will light the lives of 100 million Indians for the next half century. If all goes to plan, and no one, if I may say so, has ever made the Indian bureaucracy perform as Prime Minister Modi did in Gujarat, by the end of next year, we will have a free trade deal with what is potentially the world's largest market. And I want to make this declaration here in this Parliament. There are two can-do Prime Ministers in this chamber today, and we will make it happen. And if all goes to plan, Australia will export uranium to India, under suitable safeguards, of course, because cleaner energy is one of the most important contributions that Australia can make to the wider world. Now, Madam Speaker, geologists believe that somewhere between 130 and 300 million years ago, Australia and India actually shared the same landmass. We were, so to speak, joined at the geological hip. We cannot change continental drift, but we can ensure that we are closer friends and partners in the future than we have been in the recent past. I have never seen any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. And that's not just by the 500,000 Australians of Indian descent, and not just because the former Chief Minister of Gujarat has never been a stranger to us. And at least this should mean that it never again will be 28 years till the next Prime Ministerial visit. Madam Speaker, the cheering crowds sense that there is a natural affinity between Australia and India, a natural partnership for peace and prosperity, and they want us. They want both of us, they want all of us to make the most of it. I call the Honourable the Leader of the Opposition to support the remarks of the Prime Minister. Madam Speaker, I acknowledge the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to their elders both past and present. Prime Minister Modi, the applauding crowds that have greeted you around our country and here today in the House of the Australian people show how very welcome you are today. Might I also add, Namaste. You are here today as the first Prime Minister born in an independent India, the proud son and a distinguished former Chief Minister of your home state, the jewel of the West,
Gujarat. Your part of India has gifted so much to the world. Gandhi's moral and intellectual leadership, centuries of poetry and literature, prime ministers, diplomats, Tata and other industrialists, public sector leaders, the world's most affordable motor car, and countless actors, writers and directors. And the Gujarati have always been travellers and adventurers. Along with their fellow citizens from every part of the land of light and freedom, they have made an international leap of faith. They have left behind the familiar songs, sights and stories of their childhood for a fresh start in our country. This glorious Indian diaspora is one of the great touchstones and powerful success stories of our marvellous multicultural society. Thousands of Indian stories joining our great Australian story. And of course, one of the firmest and fastest bonds that Indians form with Australians comes through our love of cricket. Prime Minister Modi, in Australia we sometimes say that being captain of our test team is the second toughest job in the country behind Prime Minister. Some would say that we should never compare cricket with politics. After all, one is the cause of great national debates, intense passion, endless media commentary on controversial decisions, and leadership speculation. And the other is just about deciding who governs Australia. But in his 2011 Bradman oration, the Wall of India, Rahul Dravid reminded Australians that on the 28th of June 1930, when your illustrious predecessor, Jawaharlal Nehru, was arrested by the British, Sir Donald Bradman was busy decimating the English bowling attack, scoring 254 at Lord's. For Dravid and India's legendary cricket writer K.M. Prabhu, this was the motif of the 1930s. As Nehru went in and out of jail, Bradman just stayed in, and the Australian went after the English like an avenging angel. Dravid also quoted Bradman's advice to a young Richie Benaud: every cricketer is only a temporary trustee of the game. Indeed, all of us, leaders, parliamentarians and citizens, are the temporary trustees of our international relationship. It is our duty to build upon our national and common values, mutual interests, to elevate and broaden our friendship. The great significance of your visit, indeed your leadership, is the paradigm shift in Indian politics, from the politics of welfare to the politics of aspiration. I believe our task in this Parliament is to build upon our economic relationship, the load-bearing pillar of the Australia-India friendship, to find that complementarity between what India needs for Australia can supply: investment, energy, skills and training, and services. And our interests are converging more broadly on security and peace in the region. Because India's great democratic character is not just about India. It has a resonance in our region and in the world. Mr. Prime Minister, there is so much that binds us, so much that we share. The National Day, a colonial past, faith in democracy, the rule of law, respect for diversity, a love of our vast, varied and fragile environments, and a long tradition of bravery and sacrifice. I promise you, Prime Minister, that Australians will never forget 1,300 Indian troops who lost their lives on the Gallipoli Peninsula. I promise you, Prime Minister, that Australians will never forget that Indians and Australians served, fought and fell with their face towards the foe, from the deserts of North Africa to the prisoner of war camps in Southeast Asia.
We've shared the duties of good international citizens in the service of peace. Korea, Somalia, Cambodia, Rwanda, Sudan and other missions. India has been the largest troop contributor to United Nations missions, providing more than 160,000 troops in 43 United Nations missions. Prime Minister Modi, today, on behalf of the opposition, I wanted to pay special tribute to your passion for education and equality. We applaud your determination to bring dignity to the lives of every citizen, to ensuring and securing the active participation of women power in development, and bringing new amenity and sanitation to every community. And we share your belief in education's hope-giving, life-changing, transforming power. We admire your great goal, freeing your people from poverty with the skills and knowledge that guard against the scourge of youth unemployment. Prime Minister, we know that for you this is deeply personal, the product and the lesson of your own journey, from hardship to the highest office in the land. A reflection of your determination to be a prime servant, a leader at one with the dreams of the people. A desire to give every member of India's next generation the chance, in Gandhi's words, to be the change they wish to see in the world. Or as you expressed it in that memorable equation, IT plus IT equals IT. Indian talent plus information technology equals India tomorrow. Mr. Prime Minister, one of Australia's greatest leaders, Ben Chifley, was a key supporter of Indian independence and a close friend of Prime Minister Nehru. These were two great men of grand vision, the authors of The Tryst with Destiny and The Light on the Hill, just hours before his untimely death. Chifley conducted his last interview with the Indian media. His message that evening was pure Chifley, sincere and unadorned. He said, "Tell Nehru not to lose heart, but to carry on. India will still show the way to peace." Prime Minister, you lead a great, peace-loving with a renewed commitment to opportunity and equality. India does indeed, as Ben Chifley said, still show the way. You lead a nation that will shape our region and inspire our world. And you honour us with this visit to the heart of our democracy. Welcome. Mr. Prime Minister, it gives me great pleasure to invite you to address the House. I would like to begin by acknowledging the traditional owners of this land on which we stand today and pay my respect to their elders, past and present. The Honorable Prime Minister, the Honorable Speaker of the House of Representatives, the Honorable President of the Senate, the Honorable Leader of the Opposition, Honorable Members and Senators, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Prime Minister, my friend Tony Abbott. Congratulations to you and the people of Australia on a successful G20.
am the third head of the government you are listening to this week. I do not know how you are doing this. Maybe this is Prime Minister Abbott's way of surfronting you. But I'm truly honored and humbled by this opportunity to speak to you. I stand here as one of you, a representative of the people. I came to you with the greeting of 1.25 billion people of a nation. That is linked to the Australia by the great Indian Ocean, by our connected history and our many shared inheritance, and even more by our deeply interlinked destinies. And today, I've come to unite in the spirit as we were once by geography. The spirit that is fed by many starring stories of human success and sacrifice. This morning, Prime Minister and I honored our soldiers who 100 years ago made the supreme sacrifice together in the Battle of Gallipoli. The man who designed this beautiful capital of Canberra, Walter Burrell Giffin, lies buried in the old city of Lucknow in India. More than 150 years ago, an Australian fought the legal battle for a brave Indian freedom fighter, the Queen of Jhansi, Jhansi Rani Lakshmibai, against the British East India Company in India's first war of independence. He also lies buried in the Indian hill town of Mussoorie. The statue of Gandhi in Canberra is a symbol of our shared values. We celebrate the legend of Bradman and the class of Tendulkar together. We are impressed by Australian speed as you charm by the Indian spin until, of course, Shenwan came along. But above all, we are united by the ideals of democracy. Today, as I stand in this temple of democracy, I consider nations such as ours to be blessed because democracy offers the best opportunity for the human spirit to flourish. Because we have the freedom to choose, the right to speak, and the power to remove. And for us, in politics, with no option but to live with this grace. Generations of peoples, representatives have made Australia one of the great nations of the world today. From the vast strength of territory
to the abundance of resources, nature has been generous to you. But it is the people of Australia who have made Australia what it is today. A beacon of democracy and rule of law, a nation that willingly leads the search of lost aircrafts, one of the most prosperous nations in the world, among the best in Human Development Index, a nation with some of the best cities in the world, some of the most productive farms and mines, some of its best universities and research centers, an advanced technology base, and a nation with great sporting skills. Australia evokes images not just of immense beauty, but also of a great quality of life. Today, its cities are with the richness of this world's diversity, and it is home to 450,000 Indians who are as proud to be part of Australia as they are of their Indian heritage. Honorable members, there was a time when for many of us, Australia was a distant land on the southern edge of the world. Today, the world sees Australia to be at the heart of the Asia-Pacific and Indian Ocean region. This dynamic region holds the key to this world's future, and Australia is at crossroads. And as Australia has become more engaged in this part of the world, we welcome its growing role in driving this region's prosperity and shaping its security. Because we in India seek the same future for this world. We also see Australia as a vital partner in India's quest for progress and prosperity. There are few countries in this world where we see so much synergy as we do in Australia. India, a nation of more than 1 billion seeking development. Australia, a developed country of a few million people and vast resources. Since the turn of this century, India has been the second fastest growing economy in the world. Millions have lifted themselves out of poverty into a new life of possibilities. Today, we have a government with a clear majority after 30 years. From the remotest village to the biggest cities, there is a new high tide of hope in India, a new energy. It is the energy of our youth. To the age of 35, eager for change, willing to work for it, because now they believe that it is possible, that they can make it happen. It is this force of transformation that will unleash. In these 6 months that we have been in office, we have moved forward thinking with ambition, acting with speed, seeking growth, not just for growth,
but to transform the quality of life of every Indian. I see Australia as a major partner in every area of our national priority, providing skills and education to our youth, a roof over every head, and electricity in every household, the most affordable healthcare for the most difficult disease, the next generation of infrastructure that does not take a toll on our environment, energy that does not cause our glaciers to melt, clean coal and gas, renewable energy or fuel for nuclear power, cities that are smart, sustainable and livable, villages that offer opportunities, agriculture that yields more, and farms that are better connected to markets, practices and technology that save water. We have a new mission for turning Made in India into a global name, just as computer in India is. But we want to find new pathways to prosperity, not simply travel down the roads of the previous century. Much of India's future cities and infrastructure is yet to be built, and so we have a unique opportunity to make our choices now. And in every sector, agriculture, food processing, mining, infrastructure, finance, and technology, energy, from providing funds and resources to technology and expertise. Working as partners and investors, Australia has immense opportunities to participate in India's progress. In turn, India will be the answer to your search for new economic opportunities and your desires to diversify your global economic engagement. Your source for world-class skills at home or for a manufacturing location abroad. India's development, demography, and demand provide a unique long-term opportunity for Australia, and all in the familiar framework of democracy. There is no other example of this nature in the world. Indian investors too are coming here in growing numbers and commitments. Honorable members, this is an age rich in promises, but also filled with challenges. We can only pursue our dreams if we have the confidence that our cities are safe, our nations are secure, our region is stable, and our world is peaceful. This vast region and many unsettled questions and new challenges. Historical differences persist despite growing interdependence. The ocean are our lifelines, but we worry about the access and security in our part of the world more than ever before. Our region has seen huge progress
on the foundation of peace and stability. But we cannot take this for granted. Preserving it will be the most important task in the region. India and Australia can play their part in it by expanding our security cooperation and deepening our international partnerships in the region. But we do not have to rely on borrowed architecture of the past. Nor do we have the luxury to choose who we work with and who we do not. But what we do need is to work together and with others to create an environment and culture that promotes the currency of coexistence and cooperation, in which all nations, small and big, abide by international law and norms. Even when they have bitter disputes, we should collaborate more on maintaining maritime security. We should work together on the seas and collaborate in international forums. And we should work for a universal respect for international law and global norms. We must also support the process of economic integration across the region. And an open globe trading system that remains integrated. We must guard against regional trade initiatives becoming instrument of political competition. However, economic integration by itself would not be a strong basis for peace and stability. Without strong regional institutions, India and Australia are members of several institutions that are critical for the region and the world. We should coordinate more closely in East Asia. Summit, G20, and the Indian Ocean Region Association. Honorable members in our interconnected world, our shared challenges extend beyond our region. Terrorism has become a major threat for us all. In India, we have seen its face closely for 3 decades, and we see it with the clarity that comes with it. Terrorism is changing in character and expanding in its reach. Internet has made recruitment and call to violence self-generated. It also feeds off money laundering, drug trafficking, and arms smuggling. We have to deepen our bilateral security cooperation, but we need a comprehensive global strategy for a global problem. It will require closer security cooperation, but even more of no distinction between terrorist groups, of discrimination between nations. A resolve to isolate those who harbor terrorists, willingness to empower states that will fight them, a social movement against extremism in countries where it is most prevalent,
and every effort to de-link religion. As I look to the future, we would also need to ensure that outer space and cyberspace remain instruments of connectivity and prosperity, not new frontiers of conflict. Responding to the region's disasters, combating proliferation, acting against piracy, will work together on a full range of security challenges. Honorable members, since my government entered office, no region has seen more intense engagement on India's part than the Asia-Pacific region, because we understand how deeply our future is linked to this region. India and Australia can play cricket hard with each other, and I suspect we will next month. But we see Australia as one of our foremost partners in the region. I was pleased to host Prime Minister Tony Abbott as my first state guest in September. It has taken a Prime Minister of India 28 years to come to Australia. It should never have been so. And this will change. Australia will not be at the periphery of our vision, but at the center of our thoughts. So we stand together at a moment of enormous opportunity and great responsibility. I see a great future of prosperity, partnership between India and Australia, and a shared commitment to realize it. Prime Minister Abbott started us on this new journey. In September, I've come here to set our two countries more firmly on that course. With your help and with the help of the great people of India and Australia, I wish you the best for hosting great and successful ball cricket early next year. Thank you all. Thank you very much. Thanks a lot. Prime Minister Abbott will now take Prime Minister Modi around the chamber to meet with members and senators, and I do thank you on behalf of the House for that magnificent address. I trust you have a wonderful stay for the rest of the time in Australia, which I'm sure you will. I thank the President